Hello everyone. This question appears in class 6th NCERT chapter of ratio and proportion. This is fourth question of its exercise 12.3. So the question says that cost of 5 kg of wheat is rupees 19.1.5. What will be the cost of 8 kg of wheat? So firstly हमें given है cost of 5 kg of wheat is equal to 91.50 rupees. So by unitary method, cost of 1 kg of wheat is equal to 91.5 upon 5 is equal to 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 5 4 जा 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15 तो ये हो जाएगा हमारा 18.30 रुपीज. So cost of 8 kg of wheat तो हो जाएगा 1 kg की कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को तो हो जाएगा 8 3 जा 24 8 8 जा 64 प्लस 2 66 8 1 जा 8 प्लस 6 14 तो हो जाएगा 146.4 रुपीज. ये हो गया हमारा ए पार्ट. नेक्स्ट बी पार्ट में फाइंड आउट करना है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183. सो व्हीट परचेज्ड इन 91.5 rupees equal to 5 kg. So wheat purchased in 1 rupees equal to 5 upon 91.5. So wheat purchased in 183 rupees is equal to 5.91.5 into 183. So 91.5 से 183 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. So 5 2 जा 10 kg is our final answer. So 183 रुपए में हम 10 kg wheat परचेज कर सकते हैं. थैंक यू.